तरक्कियों की दौड़ में जोर उसी का चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया. Namaskar, welcome to PT Pointers, and in this video we are going to cover major headlines of the Hindu, Indian Express and Press Information Bureau. So without wasting any time, let's start today's discussion. And our first headline is related to reservation quota. And ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में बिहार असेंबली ने पास किया है बिल टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, scheduled caste and scheduled tribes from the existing 50% to 65%, together with 10% economically backward class quota. The bill will push reservation in Bihar to 75%. And do you know, friends, in its 1992 decision in Indra Sawhney versus Union of India case, Supreme Court had fixed the reservation ceiling at 50%. अभी recently मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि online gambling will not apply to poker, and the court held that definition of online gambling under Section 2 of the Online Games Act 2022 should be restricted to game of chance. Now let's know the difference between game of skill and game of chance. तो फ्रेंड्स, गेम ऑफ स्किल में जो कामयाबी है वो डिपेंडेंट होती है नॉलेज पर, ट्रेनिंग पर एंड एक्सपीरियंस पे, एंड ये टोटली लक पे डिपेंड नहीं होती. एंड गेम ऑफ स्किल में प्लेयर्स विद बेटर स्किल और एक्सपीरियंस विंस द गेम. अगर हम गेम ऑफ चांस की बात करें, यहाँ पे जीत जो है वो डिपेंड करती है लक पर, एंड ये आसान होता है खेलना बिकॉज दे डोंट रिक्वायर एनी टेक्निकल नॉलेज. एंड इसका एग्जाम्पल है लॉटरी. नाउ रिसेंटली नागालैंड असेंबली passed a bill seeking to reserve 33% of seats in urban local bodies for women. And do you know, friends, Article 371A states that no act of parliament shall apply to the state of Nagaland in respect of the religious or social practices of Naga, its customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law, and ownership and transfer of land and its resources. It shall apply to Nagaland only after the state assembly passes a resolution to do so. Now recently more than 15 products from Uttarakhand have been given the GI tag. अगर हम जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स विच हैव स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन और हैव क्वालिटीज that can be attributed specifically to the region, and it is used to identify agricultural, natural और manufactured goods. ये टैग वैलिड होता है 10 साल के लिए एंड इसको रिन्यू भी किया जा सकता है. And India is a member of World Trade Organization and it enacted Geographical Indications of Goods Act 1999, and in India GI tags are issued as per Geographical Indications of Goods Act. Our next headline is related to Agartala-Akhaura rail link, जिसको इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. द आइडिया ऑफ रेल लिंक dates back to 1974, but it gained momentum in 2010. It consists of 12.24 kilometer dual gauge rail line, and it will reduce travel time between Agartala and Kolkata from 31 hours to 10 hours. The project aims to enhance connectivity, boost trade and strengthen ties between both the countries, and ये support करता है इंडिया की Act East policy and Neighborhood First policy, and promote करता है small scale industries and tourism in the region. Our next headline is related to deepfakes, and ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि recently Indian government instructed social media intermediaries to remove deepfake videos within 24 hours as required by the IT Rules 2021. अगर हम deepfakes की बात करें तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी. deepfake एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी दूसरे की फोटो या वीडियो पर किसी और की वीडियो और फेस का स्वैप किया जाता है. ये दिखने में हूबहू असली फोटो और वीडियो की तरह नजर आता है, एंड आजकल डीप फेक से बनी वीडियोस को पहचान पाना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से वो आसानी से ट्रैप में फंस जाते हैं. अगर हम लॉस की बात करें तो इंडियाज IT रूल्स 2021 रिक्वायर दैट ऑल कंटेंट रिपोर्टेड टू बी फेक or produced using deepfake can be taken down by intermediary platforms within 36 hours. The Indian IT Ministry has also issued notices to social media platforms stating that impersonating online was illegal
under Section 66D of the Information Technology Act 2000. Our next headline is related to CBI, which stands for Central Bureau of Investigation. And ये न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है एंड गवर्नमेंट पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम सीबीआई की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वर्क्स अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 एंड इसका सेक्शन 2 अलाउ करता है टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस इन द यूनियन टेरिटरी ओनली, बट ये जो ज्यूरिसडिक्शन है इट कैन बी एक्सटेंडेड by central government to other areas including railway areas and states under section 5, provided the state government accords consent under section 6 of the act, and executive officers of CBI of the rank of sub-inspector and above exercise all powers of a station office in charge of the police station for the concerned area for the purpose of investigation, and as per the section 3 of the act, special police establishment is authorized to investigate only those cases which are notified by the central government from time to time. Our next headline is related to psoriasis, जो कि एक skin disease है and it causes red scaly skin that may feel painful, swollen or hot, and ये categorized है as non-communicable disease. It is not passed from person to person. Our next headline is related to India Finance Report, जिसको publish किया गया है recently by Center for Advanced फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड इसको सेटअप किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड रीसेंट रिपोर्ट शोज दैट आफ्टर लिक्विडिटी क्राइसिस ऑफ 2018 एंड कोविड पैंडेमिक द एनबीएफसी सेक्टर हैज इम्प्रूव्ड along all dimensions. Our next headline is related to Euclid mission, जिसको लॉन्च किया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा in July 2023. It is named after the Greek mathematician Euclid of Alexandria, who lived around 300 BC and founded the subject of geometry. The Euclid mission is designed to explore the composition and evolution of dark universe. The space telescope will create a map of large-scale structure of the universe across space and time by observing billions of galaxies. Our next headline is related to annual capacity building plan, जिसको recently launch किया गया है Ministry of Heavy Industries के द्वारा, and it outlines key strategic areas with focused capacity building initiatives within the ministry to enhance capability across all levels to achieve maximum governance to fulfill PM's vision of Mission Karma Yogi. Now recently, 6th India-Australia Joint Working Group meeting on water cooperation was held, and do you know friends, Memorandum of Understanding between India and Australia was signed in 2009 and इसको रिन्यू किया गया था 2014 में, and उसके बाद नया MOU साइन हुआ था in 2020 for period of 5 years for cooperation in the field of water resource management. Our next and last headline is related to Operation Nanhe Faristey, and under Operation Nanhe Faristey, Railway Protection Force played a pivotal role in reuniting more than 600 children in need of care and protection within their families. These children were separated from their families for various reasons. RPF worked to ensure their safe return. So with this, let's conclude our today's discussion. Thanks for listening, and for regular updates, you can follow us on various social media platforms.